Good evening, people. My name is Smriti Shah, and we will be having now the discussion on the questions from the portion of Indian society. Okay? Now, before we proceed with the analysis, we broadly have to have an idea that what is the objective of today's session. See, it is not just about the discussion on the answers. That is one aspect of it. See, there is no guarantee that the same question would be repeated again. So you should have a strategy that how the questions has to be approached, one. Second, you should have an idea that how to prepare this topic. Reason being is, there is no doubt in the fact that every year we are getting approximately 75 to 80 marks paper as far as Indian society is concerned. Another major issue is that we do not have a standard book. Although there is NCRTs, there are two books, NCRTs class 12th. That's the basic reference. You can go through it, right? But that would not be enough to ensure that every question can be answered. In that context, how are we supposed to prepare ourselves? That becomes extremely important. So the idea is to understand what is the overall weightage. The second is the nature of the questions, how to prepare, and what to expect next. That is how we are going to proceed. Take care. Broadly, every year, barring this 2021, when 80 marks was asked, it is usually 75 marks, one thing. There are broadly 6 questions. अगर वेरिएशन था तो वो सिर्फ इसलिए था that in 2021 there were 4 15 markers and 2 10 markers. Otherwise, there are 6 questions, 3 10 markers and 3 15 markers. That's it. That is the usual trend. And we have been seeing trend for last so many years. So we can safely assume that the trend more or less would remain the same. You will get 6 questions, 3 10 markers and 3 15 markers. Broadly, this year, I have just tried to make a comparative analysis of the questions from which area they have been asked. Now, if I talk about this year's paper, salient feature of Indian society, there have been 2 questions, one 10 marker and one 15 marker. We'll just see. With respect to women, there has been one 10 marker. Effect of globalization, again, 2 questions, 10 marker and a 15 marker. And then we have a question from urbanization, that is 15 marker. So overall, it is 75 marks. Okay. So what I'm trying to tell you is that did we get all the questions from the syllabus itself? Yes. Basically, there was no question which was out of syllabus. But for that, one thing is important. We should know how to comprehend the syllabus, how to deconstruct the syllabus. Because if we fail to do that, then it might happen, we may miss out on important topics. Is that clear for everyone? Second thing is, what was the possible nature of the questions? Questions can be static, questions can be contemporary, factual, analytical, or illustration based. Usually, this time, the question has been static. Usually, okay? So, more or less, we will see as and when we are discussing individual questions, but largely the questions have been static. It might happen that something has happened in the contemporary times based on which they have asked you the conceptual question. But one thing I have observed based on my understanding of these many years, that whether it is static or it is contemporary, largely questions are analytical. And if you have been asked to do the analysis, it has to be done with the help of examples. Analysis is never complete if you have not written the
examples. Very rare it happens that you get a factual question in society. Very rare. जैसे एक आध बार पूछ भी लिया था कि what are the constitutional provisions with respect to tribal welfare और why tribes are known as scheduled tribes. वो एक अलग बात है. या two legal provisions with respect to tribals. या what are the objectives of population education. Sometimes they might ask you very objective question, but that's rare. Even if they are asking one question per year, not more than that. Usually questions would be analytical. To write a good analytical answer, you should have the support of examples. But in order to prepare for this, the first thing is command over static portion, which has to be supplemented with current affairs. There is something about women reservation. There is something about secularism. Okay? There is something about uniform civil code. All of that, if this is covered in news, it has to supplement your static preparation. That is how holistic preparation is done. And if we are doing a preparation like this, there is no question in society which you can't answer. To be very honest, आप खुद पेपर उठा के देख लो, इस साल का ही नहीं, हर साल का उठा के देख लो, ऐसा नहीं होगा, oh, I can't write anything, because there is very less objectivity. Is it clear? Now comes the important aspect. How are you going to prepare for this session before we proceed with the individual questions? That's again my observation. You start with the first step. That is deconstruction of syllabus. Every topic needs to be properly deconstructed. For example, the topic in your syllabus is salient feature. Now the question arises, what do you mean by salient feature? You have to deconstruct that within salient feature, we need to study joint family. Within salient feature, we need to study caste system. We need to study patriarchy. We need to study diversity. We need to study secularism in Indian context. We need to study salad bowl perspective of multiculturalism. We need to talk about what is cultural lag. Are you getting the point? This is known as deconstruction of the syllabus. That whatever topic is given in the syllabus, you need to further deconstruct in order to identify the hidden topics in the syllabus. Syllabus में कहीं caste system नहीं है. Syllabus में कहीं marriage नहीं है. Syllabus में कहीं migration नहीं है. But in सब पे questions आएंगे because these are the hidden topics of your syllabus. So you need to visualize those hidden topics in order to prepare for this paper. That is nothing but deconstruction of syllabus. Once you have deconstructed the syllabus, then second thing is you are going to make references to PYQs. उससे बेहतर reference point कभी नहीं होता for any preparation. If you go through your 10 years PYQs, you will realize either questions are repeated, and if not, then themes are repeated. So there is no better guidance, no external factor can guide you as better as your PYQs. Is that clear? So go through PYQs very, very diligently. Everything else can take a back seat, but your PYQs cannot take a back seat. There is no substitute. Okay? Second thing is, please be very careful with the vocabulary of the subject. और वो मैं क्यों कह रही हूँ? This is very valid in this year's paper. The questions were too simple. If you do not have the command over the vocabulary of the subject, you will not fetch marks. Because then you would be ending up writing too general an answer. And this exam is not about how good you are. It is about how better you are as compared to your co-aspirant. So if you have written an answer which is absolutely right, but someone else has written an answer which is academically more nuanced, so automatically that person is going to fetch more marks. And 1 or 2 marks in every question, if it is more or less, will make the entire difference. So you should have the command over the vocabulary of the subject. And finally, you need to keep testing yourself through answer writing. In all other papers, generally I'm saying, barring ethics, essay, even governance,
There are papers which are slightly objective. So if you practice like 10, 12 questions, 10, 20 questions, you get an idea that how it can be approached. With society, with ethics, with essay, the more you practice, the more you get hang of it. Because every time you write an answer, you discover a new way of attempting the question. Sometimes you might discover a new perspective only to write the answer. Sometimes it might happen you realize that what you have written was not the right perspective. It has to be approached from some other dimension. And sometimes you will realize two people attempted the same question from different perspectives, yet both have fetched the marks. That's the beauty of a subjective paper. But that will only come with more you practice. अब इसका मतलब ये नहीं है सारा काम वाम छोड़कर हम सिर्फ सोसाइटी ही बैठ के आंसर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है. But whenever you get time, at least make sure PYQs are solved. Just make sure whichever one mock test, कोई तो एक टेस्ट सीरीज सब मतलब ज्वाइन ना भी करें, रेफर तो करते ही हैं, तो कोई एक टेस्ट सीरीज है जो अटेम्प्ट कर लो. एटलीस्ट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड 40 to 50 questions. Automatically, psychologically, you will be better placed. Is that clear? See? This is how the overall syllabus looks like. Okay. Now, what we are going to do is, as in when I am taking up the question, and it requires the deconstruction, I will do the deconstruction there and then. So let me start with the discussion of the paper, and wherever and however it needs to be prepared, we will have the interaction. Is that clear for everyone? Okay. But I'm just asking, do people have a broad idea that this is how the syllabus looks like? Okay. दो तीन चीजें हैं, अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी या करनी है या मिड स्टेज में हो, फर्स्ट स्टेप इज गो रीड योर सिलेबस. It's not just see the syllabus. In fact, I should use the word study your syllabus before you start studying UPSC. So study your syllabus. What exactly it is trying to say. Is that clear? Now, you need to tell me, is it visible for everyone? That's the first question that we are taking up. Do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? Before I start with the discussion on the answer, there are few things. Where do we study this topic? Okay. There is a topic in the syllabus impact of globalization on Indian society. This is how my entire syllabus looks like. Now, you have to deconstruct. Because UPSC has just given one statement, impact of globalization, nothing else. So we need to deconstruct the syllabus as structure and culture. Homogenization, hybridization, and revival of local culture. And when we are preparing structure, we are preparing institution, and we are also preparing sections. Sections: women, old age, let us say middle class, tribes, youth. On the other hand, institution can be joint family, it can be caste system, it can be marriage, and you can go on and on. It can be media, it can be religion,
And it's a joke in our foundation batch that whenever you have to study anything about society, then everything is rooted in globalization, industrialization, and urbanization. And this is the perfect opportunity to prove that the joke seems to be correct. The first question is, marriage as a sacrament is losing its significance in modern India. That would be covered here. Impact of globalization on marriage. Because modernization is nothing but one of the manifestation of globalization. So in modern India, to what extent marriage as an institution has underwent change? Where are you studying that topic? I'm not telling that this is how you study. वो हम बाद में बात करेंगे. Where do you find that topic? It is under this heading. There is one more question in the paper, that why caste identity is both static and fluid. Did you get the point? So again, it is because of the forces of change, globalization, industrialization, and urbanization, right? Where do you study this? Is that clear? Similarly, there is a topic, why young women in India are choosing to die by suicide. That's one of the question, right? That means it is talking about the negative impact which is happening with respect to women. I am not saying that the entire answer you will find here, because somehow it would be found under role of women and women organization. But one half of the answer you will find here. Is that very clear? There is some question, child cuddling has been replaced by mobile phones. Why did we get access, or how did we get access to mobile phones? How did that happen? Globalization, technology, internet, penetration. That is why role of family as an agent of socialization is undergoing a change. Did you get my point? There was another question which says the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. Are you getting the point? Okay. So, some aspect you will be getting here. Some aspect you will be getting here. Some aspect you will be getting here. अगर और कुछ ना भी पढ़ा होता, एक ही टॉपिक पढ़ लेते तो भी इस बार का पेपर हो जाता. मेरा कहने का मतलब ये है कि are you realizing that this topic is extremely important? But the thing is that in syllabus that we have is impact of globalization on Indian society. Everything is present here. And वो जो post liberal economy वाला question है, उसको approach कैसे करना है? Homogenization, hybridization, and revival of local culture. Ethnic identities are getting diluted. Homogenization is happening. Ethnic identities are not getting diluted. Hybridization. Ethnic identities are actually getting strengthened. Revival of local culture. Did you get the point? Everything this time, I think उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है, but ये हो गया. That every question is falling under this bracket. Is that very clear? Most important topic, हर साल सवाल आता है without fail. Is this very clear for everyone? ठीक है. Do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? Now, how am I going to go about it? This would be available to you, the PPT, where my handwritten answers are there. But how to understand these handwritten answers, let me just have an interaction with you. See, this is my observation that no matter how subjective the question is, the challenge is not just to attempt. The challenge is to attempt it within the stipulated time. तो फिर क्या होता है जब 7-8 मिनट में आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना है, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर टेम्पलेट कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट. ठीक है. एवरी क्वेश्चन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हैज 4 पार्ट्स. द आंसर फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, second is my linking statement, third is my body, and fourth is my conclusion. As simple as that.
Now the next thing that you can be prepared is, how can I introduce my answers? This also has to be done beforehand. You should have a slight idea in your subconscious mind that how all or what are the different ways in which I can introduce my answer. The first most common way of doing is defining the concept. The key concept which is used in the question. In this particular question, it is marriage. The entire question is hovering around marriage. One of the way of introducing the answer is you define what is मैरिज. और ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको मैरिज की डेफिनेशन नहीं आती, वो पता होगा आपको, ठीक है. दूसरा तरीका होता है डेटा दे दो. जैसे कि सुसाइड वाले क्वेश्चन में रादर देन डिफाइनिंग व्हाट इज सुसाइड, गिविंग डेटा इज मोर एप्ट, बिकॉज डिफाइनिंग सुसाइड विल नॉट एड एनी वैल्यू टू योर answer. In fact, on the contrary, if you give the data, that is adding some value to your answer. ये wisdom आपके पास होना चाहिए that in which question definition and in which question it has to be the data. Is that very clear? तीसरी चीज होती है premise. Suppose करो marriage पे question आ गया, अब marriage की definition ही याद नहीं आ रही है, क्या करें? तो सबसे आसान तरीका होता है premise लिख दो. Premise का मतलब होता है background, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया होगा. That marriage actually is a sacramental institution. But the point here is that because of globalization, urbanization, there was a belief that institution has undergone a change. So to what extent the sacramental nature of family has been diluted? And then you start with the answer. तो अगर marriage की definition नहीं आ रही या किसी concept की definition नहीं आ रही, the easiest way is you write the premise. Is that very clear for everyone? ठीक है. चौथा तरीका होता है कॉन्टेक्स्ट. कभी कभी क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी on ethnic identity and communalism. Here question is not just on ethnic identity and communalism, there is a context, and the context is post-liberal economy. You start with the understanding of post-liberal economy. Is it making sense? There are different ways of introducing the answer. You should prepare that how the same answer can be introduced in a different manner. Hardly it will take 2 more minutes, but you will develop that niche or the skill writing. Is that very clear for everyone? Next important aspect is linking statement. आपको realize नहीं होता आप लिखते हो, ठीक है. लिंकिंग स्टेटमेंट इसलिए लिखा जाता है, कनेक्टिंग द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. लिंकिंग स्टेटमेंट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन. बहुत बार क्या होगा, आपका क्वेश्चन आएगा 10 मार्कर में, हु हैज द टाइम एंड स्पेस टू राइट द लिंकिंग स्टेटमेंट. नेवर माइंड, यू राइट अ सब हेडिंग. That becomes your linking statement. So either you write a literal statement or you make use of the subheading. That totally is your choice, but make sure you write a connecting statement. Is this clear? Then comes the body and then is the conclusion. So let's continue with the question. So the first question was talking about marriage. So we had started with a definition that marriage is defined as socially and legally approved union, often between a man and a woman. And it is often depending or it is governed by various kind of customs, rights, laws, regulations, which clearly defines the rights and the duties of both the partners. आपको इतनी बड़ी definition नहीं लिखनी. This is for your understanding. You could have just written marriage is an institution which is defined as socially and legally approved union between a man and a woman. That's it. Is that clear? Now, a general perspective about marriage is it's a sacrament. Sacrament का मतलब होता है governed by rites and ceremony. So usually in our society, marriage is considered as a sacred bond. It is not a contract. It is governed by rites and ceremonies. It is often considered as indissoluble. मतलब आप शादी करते वक्त नहीं सोचते हो डिवोर्स हुआ तो, ना ना, हम 7 जन्म के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, राइट? सो द रिलेशन एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ. सो इट इज अ सैक्रामेंट. दिस रिलेशन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द लिंकिंग स्टेटमेंट. हाउएवर, अब मॉडर्न इंडिया में सैक्रामेंट की वैल्यू लूज हो रही है. इसका मतलब है मॉडर्न इंडिया कैसे इमर्ज करा? ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड
urbanization. And now you have to prove that how through these forces marriage as a sacrament is losing the significance. Is that clear? ठीक है. तो जब हम impact of globalization पढ़ते हैं तो हम ये टॉपिक पढ़ते हैं और ऐसे ही पढ़ते हैं that the first thing is the purpose of marriage has underwent a change. Traditionally, the purpose of marriage was maintaining the purity of the lineage, and because of which caste endogamies were practiced. But then came a time intercaste marriage, interfaith marriage. That means no longer the purpose of marriage is purity of lineage. Similarly, the primary purpose of marriage was progeny, that is procreation and raising the child. But in today's time, people are going for same-sex marriage. People are going for DINK families, D-I-N-K families. Double income, no kid. Matlab, both the people who are getting married, they are working, so double income. But they personally are preferring not to have kids. That means the purpose of marriage has underwent a change. And in that context, maybe marriage as a sacrament is losing the significance. Did you get the point? Second is, there are alternatives to institution of marriage which is emerging. Marriage was a sacred union. It was socially approved sexual union. Premarital sex used to be considered as a taboo, but now there is emergence of live-in relationships. That means alternatives to marriage as an institution are emerging. Are we getting these points? ठीक है? Commercialization of marriage is happening. पहले क्या होता था? Rituals govern करते थे marriage को, right? There used to be solemnization of marital ceremony, but now the focus has shifted on opulence of celebration. कि कितने अच्छे से हल्दी के फंक्शन का डेकोरेशन हुआ, कितने अच्छे से मेहंदी के फंक्शन में सब ग्रीन कोऑर्डिनेटेड हैं. आपके मेन्यू में कम से कम 50 तरीके के पकवान होने चाहिए. द फोकस ऑफ मैरिज as a ceremony, a religious ceremony, has been shifted to the commercialization of its aspect. Is that very clear? Second is de-ritualization of marriage. Ritual समझते? ठीक है, ceremonies. De-ritualization मतलब ceremonies अब perform नहीं कर रहे. People are going for civil marriages. मतलब simple legal marriage without any elaborate custom. People are also going for court marriages. That means there is de-ritualization of marriage. Are you understanding what I mean by the vocabulary of the paper? Then there is another development. अब देखो ये सारी कहानी आप भी लिखते, ठीक है, लेकिन जब आपके पास vocabulary होती है, आप कम शब्दों में ज्यादा बात कह जाते हो, and your answer looks academic. Is that clear? Next is secularization of marriage. See, what is secularization? Simple words. The religious significance in the society is declining. So with globalization, there is secularization. Secularization has led to decline in religious significance. Religious significance of marriage is also declining. And how we can say that? No longer it is indissoluble. Divorce and separations are happening. Are the points clear for everyone? Another sacred aspect, if you remember the definition, I said it's a socially approved union between men and women. And I said that will also govern the rights and duties of the partner. So in the traditional setup, the rights and duties of both the partners were clearly defined. That husband would be the breadwinner and women is going to provide the domestic chores. That was the sacramental nature of the marriage. But in contemporary reality, this gap is getting blurred. No longer strict sexual division of labor exists. Why? Because symmetrical families are emerging. Symmetrical का मतलब husband wife have symmetrical responsibilities. Is this very clear for everyone? ठीक है. Next important aspect. अगर sacred union होता, लोग समझते आज भी sacred union है, तो they would not have cheated on their partners. But adultery is on the rise. And adultery is happening. That means those people may not be considering marriage as a sacred institution.
Is that very clear? Now the point is, why am I discussing so many points? No guarantee that next time same question आएगा और 10 नंबर का आएगा, ज्यादा भी तो आ सकता है. बट आपको एग्जाम में सब नहीं लिखना, कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स which you think you can recall, you can write. But I would still say, remember the terms: commercialization, secularization, de-ritualization. Remember these terms. ये पूरी कहानी किसी को याद नहीं रहती. Just remember the terms. Is that very clear? But that's one side of the story. Globalization has never, at least never as in abhi tak, has not led to complete displacement or dilution of any institution. So to certain extent, it might be losing the value. But for many, marriage is still a sacrament. For example, आज भी in majority of the marriages, rites and rituals are performed. For example, Kanyadan is still performed. For example, those 7 steps, Saptapadi, that is still performed. Even today, most of the marriages are endogamous. Only 12.6% of the marriages are intercaste, according to National Family Health Survey report. Rest, all the marriages are caste endogamous. And finally, traditional practices. Even today, women observes rituals like Karwa Chauth. Did you get the point? Now, the point here is, you don't have to write every point that I have written in the answer, but the structure should reflect. मैरिज से शुरू करो, एक लाइन में सैक्रेमेंट समझाओ, फिर बताओ कैसे सैक्रेमेंट लूज हो रहा है, फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दो दैट राइट्स एंड रिचुअल्स आर स्टिल ऑब्जर्व्ड, और फिर एक लाइन में कंक्लूड कर दो. इज दैट क्लियर? पॉइंट्स आप कितने लिखते हो, दैट्स योर चॉइस, बट द पॉइंट्स, द स्ट्रक्चर हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द answer. And if you ask me, you can incorporate all the points if you remember the keywords. Purpose of the marriage, alternatives to the institution of marriage, commercialization, de-ritualization, secularization, if you remember, or threat to the institution of marriage through adultery. अगर आपको ये याद है, your answer is done. और आप एक एक लाइन में ये 5-6 पॉइंट्स बुलेट्स में लिखो एंड comprehensive answer without making much efforts. But then how will you recall these points in the exam if you remember the key terminologies? Is it making sense for everyone? Can I proceed to the next question? Is this question clear for everyone? अच्छा, आंसर नहीं, ये समझ आया कि पढ़ना कैसे है, ये समझ आ रहा है कहाँ पढ़ना है, यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो. हाँ जी. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, absolutely, absolutely you can write. Next, explain why suicide among young women is increasing in Indian society. What's the key word in this question? मतलब सबसे important चीज जिस पे ध्यान जाना चाहिए, young women. It's not women, it's young women. उसका रीजन बताती हूँ. यंग का क्या मतलब होता है? नहीं, मन से नहीं, स्टेटिस्टिकली. What do you mean by young? अच्छा, यूथ का क्या मतलब होता है? अरे नहीं, unmarried and not having kids. Young? नहीं रे, ना ना. यूथ कौन होता है? अच्छा, स्टेटिस्टिकली, एज वाइज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूथ? 15 to 35. दैट्स द एज. किसी ने आपसे नहीं पूछा कि यूथ की एज लिखो, लेकिन आपको एक पॉइंट ऑफ इनिशिएशन मिल गया कि इस क्वेश्चन में यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई विमेन इन दिस एज ब्रैकेट आर चूजिंग टू डाई बाय सुसाइड. ठीक है, पहली चीज. ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, बट द पॉइंट हियर इज 7 मिनट्स में एक अच्छा आंसर कैसे लिखें. ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है. अगेन, फर्स्ट थिंग, यू हैव आइडेंटिफाइड 15 to 35. सेकेंड थिंग इज, अगर मुझे आंसर लिखना हो तो अब मैं क्रोनोलॉजी में चलूंगी. पहले मैं विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन की बात करूंगी, फिर मैं परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्कूल की बात करूंगी, क्योंकि अभी हम 15 से 18 के स्टेज में हैं.
फिर मैं मन में सोचूं कि 18 से 23 यानी हायर एजुकेशन की बात करूंगी। फिर हायर एजुकेशन के बाद मैं मैरिज पे जाऊंगी। मैरिज में मैं दो सिचुएशन लूंगी, वन वेयर शी इज नॉट अलाउड टू वर्क एंड अदर वेयर शी इज अलाउड टू वर्क। फिर मैं जाऊंगी यंग मदर्स पे। डिड यू गेट द पॉइंट? क्रोनोलॉजी दिखी? अब आप जब आंसर लिखोगे, पॉइंट्स लिखोगे, तो सामने वाले को भी समझ आ जाएगा यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर राइटिंग। और अब क्या हुआ, जो दिमाग इधर उधर भटक रहा था अब वो एकदम चैनलाइज हो गया कि दिस इज हाउ आई हैव टू आंसर। Sometimes such questions can be written very well if you know how to organize your thought process. थोड़ा कंडेंस करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, अब स्टार्ट करें। We can start with any data. According to Global Burden of Disease Study, Indian women has twice the suicide death rate as compared to global average. However, suicide is the leading cause of death in this age bracket, 15 to 39, where 71.2% of suicide deaths among women occurs in this age group. You could have written any one data. I would prefer the second data. Is that clear? Once we have written the data, now, before I start with anything, the question is, young women are choosing to die by suicide. Answer अपनी जगह। थॉट प्रोसेस में पहली चीज क्या स्ट्राइक करती है? वाई यंग वुमेन आर चूजिंग टू डाई बाय सुसाइड? वाई? फॉरगेट, आई डोंट वांट द डिटेल आंसर। एनी वन बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वाई यंग वुमेन, इतना क्यों कैटेगरिकली यूपीएससी आस्क्ड, ऐसा क्या हुआ है आज? ओके क्या आज विमेन नई नई डिप्राइव्ड हो रही है, या पहली बार हो रहा है कि विमेन को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, या पहली बार ऐसा हो रहा है वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो रहा हो? तो आज क्यों अचानक, अब क्या हो गया? डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पहले भी थी। द पॉइंट हियर इज कि पहले women had accepted discrimination as a matter of fate. Exactly. Subjective realization of objective reality अब हुई है, क्योंकि with exposure to globalization, with exposure to social media, now women knows about her rights. She knows about the government policies. She knows that she has equal right to seek education, to work in the labor market. She has the right to be financially independent. She should not be subject to any kind of abuse. But when she is not able to ensure this, then the helplessness, anxiety, frustration is very high. And because of that relative deprivation, one of the manifestation is she chooses to die by suicide. Is this very clear for everyone? इस mindset के साथ, now read the answer. With increased awareness of the options available for young women in terms of education, along with discrimination within the families with respect to course and college, she has the right to education, but within that she doesn't have the right to choose the course and the college, which has resulted into helplessness, despair and hopelessness. Next point, failure in exam hits female students harder. Why? Because opportunity cost is very high. If the male students fail, parents will still invest in their education. But if female students fail, they will ask them to do the domestic chores. So the opportunity cost is very high. On one hand, girls are motivated to pursue higher education, and All India Survey for Higher Education talks about it also, because the gender parity is now in favor of girls. But the problem is, on the other hand, many times professional degree is just reduced to an instrument to find a good groom. कि एजुकेशन सीख कर लो, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एम्पावरमेंट और जॉब, बस बायोडेटा अच्छा लगना चाहिए. इज दैट वेरी क्लियर? अगेन, एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस. Let us suppose, even if she gets the education and she is married, career break post marriage, very high probability, because of which she is financially
dependent, very high probability she is vulnerable to abuse, very high probability of resentment and suicide. And if I have written like this, that means you can also write like this in the exam. मैं आपको अलग अलग तरीके बता रही हूं पॉइंट्स को छोटा करने के कि आप कैसे एग्जाम में लिख सकते हो. Can we make these connecting boxes? Yes, you can. Let us suppose another alternative. She is allowed to work post-marriage. Then somebody said, problem of dual burden, because of which increased stress and anxiety. Let us suppose we are talking about young mother, disproportionate responsibility of child rearing. क्योंकि हमारे यहाँ mother is considered as responsible for taking care of the child. Second is, by chance, if it is a girl child, then there exists a stigma, because it's a patriarchal society. And third, many a times she is pressurized to leave the job in order to take care of the child. So as a result, problems of postpartum depression. And in context of mental illness, she's not even given access to the healthcare treatment because there is a stigma associated with mental illness. So in that context, she feels discriminated, burdened, and inferior. Chances of choosing to die by suicide is high. Is that very clear? Let us suppose she goes to the workplace. She is working. Now she should feel empowered. But when she goes to workplace, wage gap, glass ceiling, pink-collar jobs, sexual harassment. So the expectation that she had that her life will improve, that is not happening. Then impact of social media. Unrealistic expectation with respect to how you look, how your body is, how your life and relationship should be. कोई ये समझाता नहीं कि social media पे everything is not a reality. It can be a facade also. But when people see that, look, that other female is so happy, she's so empowered, I am not, chances of relative deprivation is very high. And in that situation, they might choose to die by suicide. So overall, patriarchal society underplays the role of women in the society. It erodes their confidence and resilience, prone to mental health issues, hence choosing to die by suicide. Conclude the answer. Why did not I write any way forward? Why did not I write about any government efforts? Read the question. Explain था, discuss होता, analyze होता. उन्होंने पूछा ये relation explain करो कि why young women are choosing to die by suicide. इसीलिए हर point को हमने explain किया है. Is it making sense for everyone? Now you need to tell me, आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ? Is it making sense for everyone? Can I proceed to the next question? हाँ जी. Subjective realization of objective reality. You want me to explain that? Objective reality is a fact, but many a times you are not aware of that fact. When you realize that there exists a fact, then chances of feeling deprived is very high. For example, women का female labor force participation is less. ये तो fact है. But many a times women don't even realize that their participation is less because of patriarchy. Did you get the point? जब realize होगा that they are being denied participation in the labor market because of patriarchy, then there will be feeling of relative deprivation. Female will feel deprived as compared to males. Chances of assertion is very high. ठीक है? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है असर्ट करने की तो अच्छा है, नहीं मिलती है, हेल्पलेसनेस होती है तो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस ज्यादा आ जाता है. ठीक है? Next question. Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children. To be very honest, where do you find the answer is in ethics paper. Ethics mein there is a topic, role of socialization. Within socialization, there is a topic, role of family. Within family, role of parents as an agent of socialization. So to be very honest, you get the answer in ethics paper. ठीक है? समझ क्यों पूछा वो तो ग्लोबलाइजेशन से मिल गया.
बट लिखना कैसे है यू विल गेट इन एथिक्स। तो जो भी अब हम डिस्कस करेंगे, यू शुड नॉट फील कि अरे ये सब कहां पढ़ना है, सब पढ़ोगे जब एथिक्स करोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट। एक चीज पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, फुल स्टॉप। इसके बाद कोई टेल वर्ड है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड? सिर्फ इतना पूछा है, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन। सो द मेन आंसर इज इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन। और किसका इंपैक्ट? यूजिंग एक्सेसिव मोबाइल फोन्स। बस सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए वो एग्जैक्टली व्हाट इज इट ट्राइंग टू आस्क। इफ यू आस्क मी वट एवर इज योर मदर टंग, विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, उसमें उस क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि सोशलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट है। किसका इंपैक्ट? एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। बस, इज दैट क्लियर? और यहां पे दोनों, मोबाइल फोन्स का यूज बाय पेरेंट्स एंड मोबाइल फोन का यूज बाय चिल्ड्रन, दोनों यू हैव टू मेंशन। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? किस पे इंपैक्ट पूछा है? सोशलाइजेशन पे। सो आई वुड प्रेफर दैट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन. Socialization is defined as a process by which child is inducted into the culture of society. There are various agents of socialization, but one of the most significant agency of socialization is family, which is responsible for primary socialization. Is this very clear? ठीक है. What is the impact of socialization or impact on socialization? Now, पहले क्या होता था? Parents used to spend time with their kids. There used to be physical interaction between parents and the kids. There used to be an emotional connect. They used to hug their child. There used to be a physical touch. In that situation, sense of security used to be very high. There was a warmth in the relation. But now that cuddling has been replaced by mobile phones. तो वो जो एक sense of security है, जो वो एक parent child के बीच में secure attachment है, that is getting diluted. And whenever you don't have secure attachment, it impacts how confident you are, how courageous you are, whether you have that niche for responsibility assumption or not. Now just hold before I further proceed. In this question, मेन एसेंस ये था कि इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन से हम क्या शेप करते हैं? वैल्यूज एंड बिहेवियर। पर्पस ऑफ सोशलाइजेशन यही होता है। आप एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने हर पॉइंट के बाद इंपैक्ट लिखा है। सिर्फ पॉइंट लिखने से क्या होगा? हमें ये बताना है ना हाउ इट हैज इंपैक्टेड द सोशलाइजेशन. सो इफ इमोशनल कनेक्ट नहीं है पेरेंट एंड चाइल्ड में, दैट मीन्स सिक्योर अटैचमेंट नहीं है. तो अगर सिक्योर अटैचमेंट नहीं है तो उसका क्या इंपैक्ट है? चाइल्ड के पास करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अजम्पशन नहीं है, उसका सोशलाइजेशन इंपैक्ट हो गया. डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड यू सी द कंप्लीट चेन दैट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? दूसरा, वन ऑफ द मैकेनिज्म, और ये सब आप एथिक्स में पढ़ते हो, वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन मतलब शेपिंग योर वैल्यूज एंड बिहेवियर. One of the mechanism is observe and learn. And that is basically done through parents, because parents are role models for the children. So whatever parents do, children blindly imitate that. So if parents are busy on phone, automatically the children will also be busy on phone. And parents take pride. मेरा छोटा सा बच्चा YouTube चला लेता है. ये talent नहीं है, ये इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन है. क्योंकि वो आपको, आप किताब पढ़ते तो बच्चा किताब पढ़ता, आप फोन पर हो इसलिए बच्चा टक 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 फोन चला लेता है. इज दैट वेरी क्लियर? ऑब्जर्वेशन, लर्निंग. सो इवन द चाइल्ड, हाउ इट इज गेटिंग इंपैक्टेड? एडिक्शन विथ गैजेट्स. छोटे छोटे बच्चों को एडिक्शन हो रहा है, मतलब वो रात में भी अपनी फिंगर्स को ऐसे 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 प्रेस करते रहते हैं. And there are so many neurotic disorders which are happening among young kids. Why? Because they are addicted with gadgets or mobile phones.
एंड हाउ दिस इज हैपनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। मेरा बस कहने का एक मतलब था इस क्वेश्चन में, जो भी पॉइंट लिखो उसका सोशलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट है वो हाथ की हाथ बताते चलो, उससे क्या होगा, आंसर कंप्लीट लगेगा। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक। फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस, पहले क्या होता था, सब मिलके बैठ के बातें करते थे। अब कमरे में 4 लोग हैं और चारों अपने फोन पे लगे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बेतुकी रील्स देख रहे हैं, ठीक है, और देखकर कह रहे हैं ये रील कौन बनाता है और कौन देखता है इसको। कई कई बार नहीं होता है कि हम खुद ही तो बोलते हैं कि ये कौन देखता है ये रील, और फिर खुद ही देखकर कहेंगे कितनी बेकार। आप व्यूज बढ़ाए जा रहे हैं और 4 लोग आपस में बात नहीं कर रहे। आई एम सो सरप्राइज, पीपल हैव नथिंग टू टॉक टू ईच अदर। बच्चा यही देख रहा है that you guys are not talking to each other. There is no collective orientation. There is no cooperation. Everyone is seeking their own individual gratification. वही सीखेगा. So, lack of cooperation, collective feeling, there will be more individualism and self-centeredness. I hope you understood my point. Point लिखो और उसका impact लिखो. नेक्स्ट, सोशल स्किल्स नहीं होंगी, ओवर यूसेज है मोबाइल फोन्स का। नाउ अ डेज व्हाट हैपन, किड्स दे प्रेफर टू प्ले मोर गेम्स ऑन फोन रादर देन गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग दी आउटडोर गेम्स। आई डोंट नो आपका, मेरा मुझे पता है कि हमें लिटरली मम्मी पापा को खींच के अंदर बुलाना पड़ता था कि चलो अंदर चलो, और फिर हम निकल जाते थे दूसरी तरफ से। आजकल के बच्चों का क्या, उन्हें धक्का देके बाहर भेजना पड़ता है, जा भाई अब जा। सो द पॉइंट हियर इज दे प्रेफर वर्चुअल इंटरैक्शन रादर देन फेस टू फेस इंटरैक्शन। जब फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं होगा तो सोशल स्किल्स कैसे सीखोगे, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे सीखोगे, और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होगा। डैनियल गोलमैन क्या कहते थे, वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज सोशल स्किल्स। सो हाउ इट इज इंपैक्टिंग सोशलाइजेशन, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। और ये पॉइंट बोलते बोलते याद आया, क्योंकि पहले याद आया होता तो इसमें होता, इसमें नहीं है इसलिए बोलते बोलते याद आ गया। ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, सब्जेक्टिव पेपर में यू गेट टू नो द मोर पॉइंट्स। इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम, बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स आर द फर्स्ट एजेंसी बट देयर वैल्यू सिस्टम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द चाइल्ड्स वैल्यू सिस्टम, because child is not taking the values from the parents, they are seeking their values from the mobile phones, and the chances of juvenile delinquency is very high. Juvenile delinquency का मतलब होता है crime committed by children. Is this very clear? ठीक है। Cognitive development, छोटे छोटे बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं। मुझे आज का तो पता नहीं, पहले हम लोग कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते थे एंड वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि बताओ अच्छा ये क्या होगा, तो बट आजकल के बच्चे तुरंत, और पहले क्या होता, कैलकुलेटर ढूंढना पड़ता था, अब क्या तुरंत फोन निकालो उसमें कैलकुलेटर है, तो वो कॉग्निटिव, और उल्टा चैट जीपीटी और आ गया, तो अब जो क्रिटिकल थिंकिंग रही सही रह गई थी वो भी अब गई। मतलब पहले इंसान पहले कोशिश करता था, लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट, अब सबसे पहले चैट जीपीटी करता है, उसके बाद देखेगा अटेम्प्ट करना है तो। सो द पॉइंट हियर इज कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉग्निटिव स्किल्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड। ये मेरे हिसाब से आई थिंक this is the major, and as a mother to a young child I can totally relate to this point. Access to unfiltered content, हर जगह तो शॉर्ट्स और रील्स है, कितना आप रोको। सो द पॉइंट हियर इज, आप कितना चाइल्ड लॉक लगा लो, सब कुछ कर लो, ये सारी चीजें पता नहीं कहां से आ जाती हैं। सो नाउ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, चाइल्ड हैज अनफिल्टर्ड एक्सेस। अब क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग एक्सेस टू द कंटेंट विच माइट नॉट बी एज अप्रोप्रिएट। So the chances of mobile maturity among young kids is very early. ठीक है, तो एक डेटा कहता है, according to McAfee Group, Indian children are youngest to reach mobile maturity across globe. Is that very clear for everyone? However, ऐसा नहीं है, technology is like a double-edged sword. If it has negatives, it also has positives. We should know how to use it. The same technology, if used properly, the same mobile phones, they can act better access to education, and not only education, they can actually make the education personalized and customized according to the intellectual ability of the child, which can improve their learning outcome. It can also act as a source of
entertainment. It can also provide exposure to technological advancement, but it totally depends how you are using the technology. Is it making sense for everyone? And finally, you can conclude that family is an important agency and they should do their role properly. So it's their responsibility to create a healthy environment. सारे पॉइंट्स फिर नहीं लिखने, 2 से 3 या 4 पॉइंट्स जो आपको याद आ जाए, इट्स अ 10 मार्कर, आप लिख सकते हो. मेरा कंसर्न ये है, हर पॉइंट के बाद ये जरूर बताना व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन. दैट विल कंप्लीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आर वी क्लियर विथ ऑल द 3 क्वेश्चंस? Is it making sense? Are you understanding where to fetch the answer? Let's move to the next. Values इसलिए क्योंकि impact on socialization. Socialization आपका क्या shape कर रहा है? ठीक है ना? इसलिए socialization हमारा क्या shape करता है? Value shape करता है. Values हमारा क्या shape करते हैं? Behavior. तो मैंने values और behavior पे लिख दिया. Did you get my point? ठीक है? Next, does urbanization lead to more segregation or marginalization of poor in Indian metropolises? Basically, urban metro cities mein, it is saying, is it leading to segregation and marginalization of poor? To be honest, this is a direct question. And in fact, we have done also. और आजकल में ही किया था, तो याद भी होगा. So the point here is कि urbanization is a topic in your syllabus, right? Urbanization, problems and remedies. Problems में एक problem होती है socio-cultural problem. उसके अंदर ये topic आता है. It's a very simple question. ठीक? Now, how we can start? Again, you can start with the definition of urbanization. You can start with the data, or you can start with the premise. Why am I saying premise? Urbanization is a positively connoted term. But the question is asked, it is aggravating the segregation and marginalization. So we can say that although urbanization is positively connoted, but rapid urbanization is creating situation of distress. And one of the implication is segregation and marginalization of poor. And then you can start with your answer. Is that very clear for everyone? ठीक? Let's talk about the answer. Simple question है, फिर से केवल points याद रखना. पहला point, जब बहुत ज़्यादा urbanization होता है, it is known as over urbanization. If there is over urbanization, that means the availability of houses, affordable houses for living will decline. That means you would be forced, if you do not have enough income, you would be forced to live in slums. Slum proliferation is nothing but example of segregation. Is it making sense for everyone? ये point clear हो रहा है? Read the point. How urbanization leads to segregation? Rapid urbanization. I'm using a term here, rapid. Rapid urbanization, shortage of affordable housing, forcing low income individual, either informal settlements or slums or any area where there is lack of adequate infrastructure. तीनों ही situation में segregation और marginalization increase हो रहा है. Is it making sense for everyone? Is this first point clear for everyone? Next point. Point के साथ चाहो तो example दे सकते हो कोई भी slum का. ठीक है, that's your choice. Second point is limited access to resources. भाई देखो, ऐसा नहीं है कि resource availability थी नहीं. 100 लोगों के लिए स्कूल भी था, हॉस्पिटल्स भी थे, जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी, बट अचानक से 500 आ गए. तो अब क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी इन डिमांड एंड सप्लाई है. तो जो गुड क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, दैट वुड बी कॉर्नर्ड बाय द इलीट सेक्शन. That means the poor will not get access to good qualitative social infrastructure. Social infrastructure का मतलब होता है health, education, skill development. इसकी वजह से जो already existing inequality है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. So it is leading to segregation and marginalization. Is it making sense for everyone? यहाँ तक point clear है? Next, with respect to economic opportunity. अब देखो, globalization has led to urbanization. Urbanization has actually created jobs, but now they have created two kind of jobs. One is highly skilled,
high paying jobs, but that has been acquired or cornered by the educated section of the society. On the other hand, there is proliferation of informal sector. So you are getting job, but the problem is informal sector में social security नहीं होती, wages नहीं होते, working condition नहीं होती, chances of marginalization to increase is very high. Is this very clear for everyone? Are the points making sense? ये सारे points आपको पता है, आप लिखना सीख लो. कभी कभी क्या होता है, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं होता. ट्राई टू मेक यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, ट्राई टू मेक यूज ऑफ डायग्राम्स. इसीलिए मैंने लिख दिए कि जब आप इसको दोबारा रिवाइज करो तो यू शुड गेट एन आइडिया दैट वेयर डायग्राम्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड. दिस कॉन्सेप्ट जेंट्रिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है. जेंट्रिफिकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. सपोज दिस वॉज अ रीजन. It consisted of low income group people. It consists of chawls and old industries, factories. जो ठीक, फिर क्या हुआ? The rich people started moving to this area. They started developing this area. They started making high-rise apartments in this area. Now this area, the prices has increased. So because of rise in the prices of the property here, because this area has now been upgraded, new rich affluent people are coming. तो अगर नए लोग आ रहे हैं तो पुराने क्या हो रहे हैं? Displace. और पुराने कौन थे? Low income people. That is nothing but gentrification. Is that clear? For example, मुंबई का लोअर परेल, उसमें पहले मिल्स और चौल हुआ करती थी. फिर धीरे धीरे लोग आए, वहां का अपग्रेडेशन करने लग गए, हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाने लग गए, मॉल्स बनाने लग गए, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो बढ़ गए. तो लो इनकम पीपल अब वहां पे रहना अफोर्ड नहीं कर सकते. सो दे वर डिस्प्लेस्ड टू पेरिफेरीज. दिस इज नथिंग बट जेंट्रिफिकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. अनदर एग्जांपल, हौसखास विलेज. डिड यू गेट माय पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पब्लिक स्पेस. ये एक मेजर दिक्कत होती है. हम बोलते हैं अर्बन एरिया है, ब्यूटिफिकेशन करो. ये नहीं सोचते कि उस प्रोसेस ऑफ ब्यूटिफिकेशन में कौन डिस्प्लेस हो जाता है? द पुअर. फॉर एग्जाम्पल, हमें चेन्नई का मरीना बीच ब्यूटिफिकेशन करना था. हु गॉट डिस्प्लेस्ड? फिशर फोक्स फ्रॉम द नियर बाय स्लम एरिया. हम ये नहीं कह रहे कि ब्यूटिफिकेशन मत करो, बट देन इंश्योर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. दैट इज द इश्यू. ठीक. दूसरा चीज ये होता है यार कि कोई भी इन्वायरमेंटल शॉक्स और डिजास्टर आते हैं, हु इज मोर वल्नरेबल? पुअर. अब अर्बन फ्लडिंग हुई एलीट की गलती की वजह से. आपने जंगल ऑफ कॉन्क्रीट्स क्रिएट करे, आपने सिटी की नेचुरल अब्सॉर्बिंग पावर डाइल्यूट करी, आपने लेक्स पे कवर करके उस पर घर बना दिए, तो आपकी गलती थी. लेकिन ब्रंट कौन बेयर कर रहा है? पुअर. क्योंकि जब अर्बन फ्लडिंग हुई तो उसकी वजह से द पुअर हु वर लिविंग ऑन दिल्लीज यमुना फ्लड प्लेन्स, दे आर फेसिंग द ब्रंट. सो द मार्जिनलाइजेशन इज फर्दर गेटिंग एग्रीवेटेड. क्या आपको जेंट्रिफिकेशन नहीं पता, स्लम प्रोलिफरेशन नहीं पता, अर्बन फ्लडिंग नहीं पता? सब तो पता है, आंसर लिख जाते हैं आराम से. पर ऐसे में क्या याद रखना है? की वर्ड्स. तो जब रिवाइज करो, ओनली रिमेंबर द कीवर्ड्स. उसके अंदर का कंटेंट खुद बन जाता है एग्जाम में. इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ स्टेक, देन इवन पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स डोंट टेक यू सीरियसली. सो लैक ऑफ पॉलिटिकल representation, their needs are not being heard, so chances of marginalization is very high. Is it clear? Next, challenges faced by migrants. Often होता है, migrants are the victim of identity politics. Chances of being subjected to violence is very high. Son of soil सुना है ना? So often the migrants, especially in the informal sector, they are very vulnerable to abuse. और दूसरा, if they are from informal sector, they don't have much education. So chances of being devoid of skills, information, bargaining power is very high. Often they are caught in exploitative labor arrangements. Again, their marginalization further gets aggravated. Are the points making sense? और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं. हाँ, पर इसका आंसर आपको दो जगह मिलेगा. एक अर्बनाइजेशन और दूसरा माइग्रेशन.
क्योंकि माइग्रेशन में एक टॉपिक होता है इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट्स. डू वी रियलाइज दैट अर्बनाइजेशन इज वन टाइप ऑफ माइग्रेशन ओनली? ठीक है. सो यू विल फाइंड द आंसर अंडर 2 हेडिंग्स. अगर आपने पढ़ा है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मैं हर बार यही कहना चाह रही हूं, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द सिलेबस. यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स, दैट्स इट. ठीक है. This point I wanted to add, that's the thing which I talk in my foundation class also. Add intersectionality. That marginalization of poor is increasing, but within poor, 2 sections are more vulnerable. One is women and other is child. क्योंकि अगर child slums में रहेंगे तो sanitation नहीं है, जिसकी वजह से chances of stunting and wasting are very high, which in itself will make a vicious cycle of poverty. And दूसरा, women are also very vulnerable. For example, the violence against women in slums. क्यों? Safety infrastructure नहीं है, CCTV cameras नहीं है, street lights नहीं है. Did you get the point? So this is one takeaway. Please remember, social issues में intersectionality को जरूर add करना. That caste is a basis of discrimination, but within caste, women are more vulnerable. तो gender और caste का intersection. Person with disability is vulnerable, but within that, child is more vulnerable. Intersectionality of person with disability and age, that is child. Is that very clear? तो कोशिश करना ये पॉइंट ऐड करो, कुछ नया लगेगा. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डू दैट. Is this very clear? And finally, other side of the story. वही हर चीज में double-edged sword. If it is creating challenges, it is also generating the opportunity. ठीक है, but ये main content नहीं है, इसलिए इसको हल्का सा लिख के छोड़ दो, क्योंकि यार नेगेटिव पे एंड नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि urbanization is a positively connoted term. So although challenges are there, but it also creates opportunity for inclusion of poor. कैसे? At least jobs create तो हो रही हैं, despite being unskilled. At least access to infrastructure create तो हो रहा है. For example, मोहल्ला clinics. Similarly, platform for social mobility. Remember, urbanization, अभी हम I think so पढ़ेंगे, caste का टॉपिक है. हाँ, urbanization is characterized by an ideology that is known as urbanism. ठीक है. Basically, urbanism का मतलब होता है, मैं आगे भी मेंशन करूंगी इसलिए मैं अभी पढ़ा देती हूँ. Urbanism का मतलब होता है anonymity. Urbanism का मतलब होता है heterogeneity. I'll explain. You guys are from different cultural backgrounds. You are sitting together in this classroom. That means you are heterogeneous. And do you care what is the background of the person sitting next to you? That is because there is anonymity. That means in urban area, there is an opportunity to improve your status despite your cultural background. So despite your caste, because in urban area, caste is not the basis of occupational division of labor. Did you get my point? ठीक है, तो opportunities for inclusion of poor is generated, but despite those opportunities, there are many challenges. So segregation and marginalization is happening. Is this very clear? ठीक है. इस क्वेश्चन में क्योंकि इन्होंने पूछा डज मतलब क्या आपको ऐसा लगता है, तो यहां पर थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में बता दो कि गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव फॉर इंक्लूजन ऑफ पुअर. हाउएवर द चैलेंजेस नीड्स टू बी इरेडिकेटेड. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस? अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन डिस्कस करे, आपको उसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है? Are you understanding how in every question, based on the demand, your introduction, conclusion, and presentation will change? Is this clear? Let's take the next. Why is caste identity in India both fluid and static? Before we proceed, I'll take 2 minutes of yours to tell you one thing. एक स्टैंडर्ड तरीका है फॉर दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू फाउंडेशन कोर्स. देर इज अ स्टैंडर्ड वे. वेन एवर यू प्रिपेयर इट एज ट्रेडिशन, forces of change, and
contemporary reality. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ it is related to caste, it is related to every topic. Marriage, traditional form. Forces of change, contemporary reality. Caste system, traditional form. Forces of change, contemporary reality. It's a standard way of preparing. In this question, the topic is on caste. Caste का standard feature है hierarchy, separation of contact, and occupational division of labor. And all of this is based on purity and pollution. There are forces of change, industrialization, urbanization, modern value system, and role of state. Role of state में क्या क्या आता है? Affirmative action. It can be Mandal Commission. It can be land reforms. I'm generally telling you that this is how forces of change can be written. अब contemporary reality में दो चीजें आती हैं. एक, some aspect of traditional caste system has underwent a change. That means the identity is becoming fluid. However, some aspect of traditional caste system still continues. That means identity is still static. Standard question. Is this very clear? अगर हम इस तरह से तैयारी करेंगे, you will never ever falter. क्योंकि हर institution now is dynamic because of the forces of change, and no institution has completely been changed. Some element has changed, some element are still continuing. So it is blend of fluidity and staticness. Can we move back to the question? See? Very quickly. Caste is a system of social stratification based on principle of purity and pollution. It has standard characteristics, hierarchy, separation of contact, and occupational division of labor. Due to forces of change, अच्छा एक चीज है, बहुत सारे लोग पहले static लिखेंगे, फिर fluid. मेरा एक reason बता देती हूँ. Question क्या है? Fluid and static. So I choose to write exactly as it is being asked in the question. मैं risk ही नहीं लूंगी कि कहीं इसी बात के एक नंबर ऊपर नीचे हो गए कि स्ट्रक्चर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं है. क्योंकि मेरा ये मानना था, ऐसे आई एम जनरली सेइंग कि हो सकता है ना वो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हो कि फोर्सेस ऑफ चेंज की वजह से द आइडेंटिटी बेस्ड ऑन कास्ट हैज बिकम फ्लूइड, एंड देन यू विल शो दैट हाउ इट स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन स्टैटिक. So maybe that is why they asked fluid and static. So let's begin. But before that, identity का मतलब तो पता है ना? It is a label which we associate to us or others. When your label is based on caste, it is referred as caste identity. As simple as that. Due to forces of change, wahi Ram Kahani, urbanization, industrialization, there has been certain changes. Give the subheading. Caste identity as fluid. कैसे कास्ट चेंज हो रहा है? अब देखो सब में रिलेशन आएगा. अगर तुमको वो फोर्सेस ऑफ चेंज की क्रोनोलॉजी याद है, you automatically know the points. Because of industrialization, there is emergence of caste neutral jobs. Now you get the jobs based on your skills, not on the basis of your caste. That means occupational division of labor is getting challenged. Now no longer your caste identity will determine which job you are performing. Is it making sense for everyone? Second, because of urbanization, अभी बताया था, urbanism हो रहा है. That means you are emerging in a secular pattern of living, anonymous and heterogeneous. That means that separation of contact is no longer valid. Is that very clear? For example, intercaste marriages वगैरह हो रही हैं. Secular pattern of living आ रहा है. People belonging to different caste communities, they are coexisting together. That means caste identities are getting diluted.
Is it making sense? For example, when you travel in metro, you don't care about the caste of the other person. हम ये थोड़ी ना पूछते हैं भाई साहब आपकी caste क्या है, separation of contact maintain करना है जब आप metro में travel करते हैं. That means that separation of contact is getting diluted. Your caste identities are getting diluted. तीसरा, modern value system आ रहा है. Modern value system क्या question कर रहा है? Purity and pollution. And if purity and pollution are getting questioned, now listen. 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे? हायरार्की, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट. 2 चेंज हो गए. तीसरा क्या था? हायरार्की. हायरार्की इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज हायरार्की बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन. तो अब लोग कह रहे हैं अगर हायरार्किकल अरेंजमेंट है तो वो आपके स्किल्स पे होना चाहिए, आपके बर्थ पे नहीं. Did you get the point? That means आज के टाइम पे what matters is your secular hierarchy rather than your ritual hierarchy. To what extent you are educated, to what extent you have political power, to what extent you have economic ownership rather than which caste you belong. Why? Because hierarchy on the basis of purity and pollution is undergoing a change. So caste identities are becoming more fluid. Is this very clear? Similarly, secularization of caste भी हो रहा है. देखो, secularization एक concept है. Secularization of marriage हो रहा है. Secularization of caste हो रहा है. Secularization of caste के 2 मतलब होते हैं. एक, de-ritualization. वो अभी हमने पढ़ लिया. Purity and pollution is no longer valid. दूसरा, politicization. अब politicization में क्या होता है? Inter-caste linkages बन रहे हैं. Dominant caste aligning with other caste, upper caste aligning with other caste, because वहां पे अब caste identity matter नहीं करती, अब matter करता है majority number, क्योंकि political power चाहिए. So inter-caste alliances are happening. So caste identity is becoming more fluid. नहीं करता है politicization of caste. Okay, what is politicization of caste? कास्ट के बेसिस पे वोट करना और कास्ट के बेस पे वोट मांगना. जैसे कि एरिया का कास्ट कॉम्पोजिशन डिफाइन करेगा कि किस कैंडिडेट को फील्ड करोगे. एक बार सरकार बन जाए तो कैबिनेट इस बात पे डिसाइड होगी कि कास्ट का क्या कॉम्पोजिशन है. और जब वोट मांगने जाएंगे तो कहेंगे अगर आप हमें वोट दोगे तो वी विल बी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ योर कम्युनिटी. उसमें डिपेंड नहीं करता कि आप और वो सेम कास्ट को बिलोंग करते भी हैं या नहीं. That means inter-caste alliances are forming. Caste identity is becoming fluid. Is it clear for everyone? Sanskritization हो रहा है. What is Sanskritization? When lower caste emulates the culture of upper caste in order to improve their status. अगर caste identity static होती तो क्या आप अपने customs, practices, rituals change करते? नहीं. But आप कर रहे हो. That means no longer your caste identity is static. It is fluid. मिल तो गए पॉइंट्स. और ये सब कुछ आप पढ़ते हो. कास्ट सिस्टम इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. लेकिन कास्ट आइडेंटिटीज अभी भी स्टैटिक हैं. और ये कहां मिलता है? हम कास्ट का टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसकी पहली डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना. कास्ट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ हायरार्किकली अरेंज्ड closed endogamous strata where membership is ascriptive, contact is restricted and mobility is theoretically impossible. This is the first thing that we study. अब इसमें मैंने एक शब्द बोला that it is consisting of hierarchically arranged closed. Closed का मतलब हो गया ना static. Closed का मतलब क्या हुआ कि you cannot change your identity. और उस क्लोजनेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या कहते हैं? कास्ट इज एस्क्रिप्टिव. यू डोंट अचीव योर कास्ट, यू आर बोर्न इन योर कास्ट. तो आप अपनी कास्ट कैसे चेंज कर सकते हो? स्टैटिक ही तो रहेगी. डिड यू गेट द पॉइंट? दूसरा, आज भी कास्ट एंडोगेमी प्रैक्टिस होती है. आज भी सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस होता है. डिड यू गेट माई पॉइंट? आज भी रिएक्शन टू संस्कृताइजेशन होता है. कास्ट रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. Is that very clear? Very quickly see the points. Hierarchy still exists. Hierarchy मतलब layered arrangement, superior and
inferior. आज भी वो four fold classification है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र. So that arrangement still holds ground. Second, caste is always ascriptive. मतलब you are born in your caste. Even today, occupational division of labor exists. एक रिपोर्ट कहती है 66,697 manual scavengers, and out of them 96% of them belongs to a particular community. That means occupational division of labor is still a reality. Is that very clear? Another data, separation of contact, which says, ये मैं बात भी करती हूँ कि लोग कहते हैं अर्बन एरिया, अभी मैंने नहीं बोला अर्बनिज्म है, anonymity है, फर्क नहीं पड़ता किस कास्ट को बिलोंग करते हैं. So there is a study by Amit Thorat and Omkar Joshi which said 30% of urban households practice untouchability. There is another study by JNU Center for Study for Social Exclusion. 27% of modern Indian families are practicing untouchability. Satish Deshpande talks about how explicit untouchability may not be there, but implicit untouchability is still there. For example, separate utensils to consume food and water, to maintain separation of contact. तो आज भी ये आइडेंटिटीज रिजिड हैं. कास्ट रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, लोग संस्कृताइज कर रहे हैं, बट देयर इज काउंटर रिएक्शन विच इज हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी न्यूज विच यू रीड दैट देर वॉज अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी हु वेंट फॉर घुरचड़ी रसम, बट देन ही वॉज बींग अटैक्ड. Why? Because it is believed कि ये जो घुरचड़ी की रस्म होती है, when marriage happens, it is a ritual of a upper caste and it cannot be practiced by lower caste. आज भी ऑनर किलिंग होती है फॉर प्रतिलोमा मैरिजेस, क्योंकि आइडेंटिटीज आज भी स्टैटिक हैं. इज दिस वेरी क्लियर? एंड देन फाइनली यू कैन कंक्लूड that because of historical nature it is still static, but because of contemporary changes it is becoming fluid. There is coexistence of staticness and fluidity. Is this clear for everyone? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. आज भी caste based ghettoization exist करता है. Is it making sense for everyone? हाँ हाँ, बिल्कुल, absolutely. The ritual aspect of it, बिल्कुल. Can we move to the next last question? ठीक, चलो. Last ही है ना, I guess. हिम्मत है भाई तुम लोगों में, गजब हिम्मत है. Okay. ये अच्छा क्वेश्चन है. ये Read the question. Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. ठीक है. See, if you ask me in academic terms, then there is one answer. But if you ask me from the perspective of student, there is another answer. I'll tell you the reason. Most of us have interpreted post-liberal economy as whatever has happened after 1991. ठीक है, लेकिन अगर academic conceptualization पे जाएं तो post-liberal is a critique of classic liberalism. Okay, I'll tell you the difference कि how it works. ठीक है, सपोज करो लिबरलिज्म हुआ, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन दैट हैपेंड, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गया, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो गए, मूवमेंट ऑफ गुड्स वगैरह हो गए, टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट कर रही थी. उस कॉन्टेक्स्ट में होमोजेनाइजेशन हो रहा था, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इमर्ज कर रहा था, अनोनिमिटी हेट्रोजेनिटी इमर्ज कर रही थी. तो जो वो स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं वो डाइल्यूट हो रही थी, इंटर रिलीजियस हार्मनी बढ़ रही थी. ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स वर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. बट फिर क्या हुआ, द फ्री मार्केट इकोनॉमी, इंडिविजुअलिज्म, डीरेगुलेशन, होमोजेनाइजेशन, इट स्टार्टेड हैविंग द पिटफॉल्स. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इनइक्वालिटी वॉज ऑल्सो गेटिंग वाइडेंड. Jobs were getting created, but it was only for skilled workers.
So marginalization or segregation was also increasing. And because of technology, social comparison was also happening. पहले लोग कितना तरक्की कर रहे हैं वो उन्हीं को पता होता था, अब लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं वो सबको पता होता है, क्योंकि हर चीज स्टेटस पे अपलोडेड होती है और फिर सामने वाला देख के थोड़ा सा कुढ़ता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो जितना सोशल कंपैरिजन होगा उतना रिलेटिव डेप्रिवेशन आएगा। Is that clear? तो अब क्या हुआ, when people started feeling relatively deprived, they started questioning market approach, they started questioning individualism, they started questioning complete deregulation by the government, क्योंकि ना ही केवल inequalities emerge कर रही थी, ना ही केवल homogenization of culture हो रहा था, environmental degradation वगैरह भी हो रहा था। So as a counter to the impact of liberalism, the idea of post-liberal was put forward. And post-liberal का मतलब होता है balance, कि complete freedom नहीं होना चाहिए, government should have some regulation. The morality and the ethics were initially compromised. They should again guide the policy making. There should be community cohesion. Individualism should be taken a backseat. Collective orientation should emerge. Is that very clear? क्योंकि लोगों ने देखा कि ये prosperity, ये individualism उनका mental stress, anxiety, inequality और ज़्यादा aggravate कर रहा है। तो people started coming together to assert their identity. So if academically you ask, the answer should be only one aspect, that is revival of local culture. लेकिन suppose करो नहीं strike करा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा होमोजेनाइजेशन लिख देना, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन लिख देना, लेकिन रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर इज द मेन कंटेंट। कुछ ना भी समझ आए तो क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना चाहिए था कि दिस वाज टॉकिंग अबाउट द असर्शन ऑफ द आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। नहीं तो कम्युनलिज्म पे इंपैक्ट क्या पूछते, इंपैक्ट पूछ रहे हैं, इसका मतलब है ना कि कम्युनलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है, कम्युनल टेंशंस बढ़ रही हैं, रेडिकलाइजेशन पोलराइजेशन हो रहा है, एथनिक आइडेंटिटी का असर्शन हो रहा है। दैट इज व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो आइडियली तो यही होना चाहिए था कि रिवाइवल और असर्शन ऑफ आइडेंटिटी शुड बी द मेन कंसर्न। लेकिन अगर आपने होमोजेनाइजेशन थोड़ा सा लिख दिया, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये मेन कंटेंट है। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी रेफर्स to the deviation from liberal views or market economies and globalization. It rejects individualist view on society and focuses on reassertion of group identity. अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, अपने आप अब आंसर क्लियर है। तो दो पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करते, फर्स्ट द इंपैक्ट ऑन एथनिक आइडेंटिटी, अनदर द इंपैक्ट ऑन कम्युनलिज्म। अब एक चीज हम पढ़ते हैं ना एथनो नेशनलिज्म कोर्स में, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटिफिकेशन के 3 बेसिस होते हैं। जेंडर, मैं वो क्लासरूम स्टूडेंट से बात करने लगी थी, 3 स्ट्रैटिफिकेशन के बेसिस होते हैं। वन इज जेंडर, अदर इज रेस एंड थर्ड इज एथनिसिटी, क्योंकि बाकी सब एथनिसिटी का सब पार्ट बन सकते हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इट कैन बी द सब पार्ट ऑफ एथनिक आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? तो जब हम बात करते हैं असर्शन ऑफ एथनिक आइडेंटिटी की, तो हम इसको अब इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे दो असर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, एक एग्जांपल दे दो असर्शन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, एक दे दो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, एक दे दो कास्ट आइडेंटिटी, आंसर तैयार हो गया। अगर हमको ये पता है कि एथनिक आइडेंटिटी के क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो 4 एग्जांपल्स तो यहीं तैयार मिले, कास्ट, ट्राइबल, लैंग्वेज, रीजन। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे, सिंपल, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ रही हैं आफ्टर लिबरलाइजेशन, डिक्लाइन इन गवर्नमेंट जॉब्स हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज कम हो रही थी, बिकॉज ऑफ विच नाउ कास्ट ग्रुप्स आर डिमांडिंग रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओबीसी स्टेटस की डिमांड है ना, तो मतलब रीअसर्शन ऑफ कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी हो रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली कास्ट ग्रुप्स आर फॉर्मिंग देयर एसोसिएशन इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
और वो क्या है, जैसे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज गोइंग टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ विच कास्ट ग्रुप. रीअसर्शन ऑफ कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी हो रही है ना, ठीक. सिमिलरली ट्राइबल ग्रुप्स, दे आर डिमांडिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस. जो इनिशियली नॉन ट्राइबल ग्रुप्स थे, नाउ दे आर डिमांडिंग ट्राइबल आइडेंटिटी. Demand of ST status by Metis in Manipur. There have been other communities like Rajbanshi. They are demanding. There is another community, Koch Rajbanshis in Assam. They are demanding ST status. Why? Because today they are suffering from the problem of land alienation, cultural dilution. So they are reasserting their identity by demanding ST status. तो tribal identity assert हो रही है, ठीक है. Similarly, with respect to language, linguistic reorganization की फिर डिमांड आती है ना, डिमांड फॉर गोरखा लैंड, डिमांड फॉर मिथिलांचल. दीज आर बेस्ड ऑन लैंग्वेज. डिमांड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन मदर टंग. What is it? It is reassertion of your linguistic identities. Can we write that example? Similarly, regional identity, son of soil होता है ना, हम बात करते तो दिस इज नथिंग बट असर्शन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी. सो व्हाई इज इट हैपनिंग? रीजन में क्यों स्मॉल स्टेट्स की डिमांड आती है ना, जैसे बोलते हैं यूपी को डिवाइड कर दो, अवध रीजन हो गया, बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, पश्चिम प्रदेश हो गया. बात करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि रीजनल आइडेंटिटी असर्ट हो रही है. स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जॉब्स नहीं है, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन है. तो चाहे वो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी हो, पीपल आर डिमांडिंग स्मॉल स्टेट्स. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? And why this is happening? It is the negative impact of globalization, and that is why people are talking about reasserting their identities. Is it making sense? अब दूसरे पे आ जाते हैं. इसमें आप ये डोमिसाइल रिक्वायरमेंट वाला एग्जाम्पल भी दे सकते थे. वो 75% रिजर्वेशन है ना प्राइवेट जॉब्स में, है ना. सो रीजनल आइडेंटिटी का ही तो एग्जाम्पल हुआ ये. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ लिबरल इकोनॉमी ऑन कम्युनलिज्म. Communal tensions are on the rise. Polarization for political purpose. Global participation by religious organization. Spread of religious ideas. These are broad headings. आप कोई और heading सोच सकते थे. That's totally your choice. Communalization पे क्या impact? एक simple सा logic है. घूम फिर के मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे बड़ी चीज होती है पैसा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट. अगर उसमें डिस्पैरिटी है तो चांसेस ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, दीज आर वेरी हाई. ठीक है. सो ग्लोबलाइजेशन लीडिंग टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विल लीड टू फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन. इट विल लीड टू कम्युनल टेंशंस. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक. सिमिलरली कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है. जैसे अभी हमने पढ़ा था ना पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, वैसे कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है. तो बेसिकली कभी कभी सम फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, दे फैन द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड दे ट्राई टू पिट वन ग्रुप अगेंस्ट द अनदर. सो दैट इज हाउ इट फंक्शंस. एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं क्लास में जिसे कहते हैं जीरो सम गेम, कि देर आर पीपल हु मेक यू बिलीव दैट पावर इन द सोसाइटी इज ऑलवेज constant. So if someone is gaining power, that means you are losing power. And this is being used by fringe elements to pit one group against another. And in this case, it can be one religious group against another. So communalization of political aspect. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है. अब सोशल मीडिया पे कोई रेगुलेशन नहीं है. So chances of false information, fake narratives is very high. कोई भी आइडिया एक कॉर्नर पे इमर्ज कर रहा है, it is getting disseminated to other areas. Chances of flaring of communal sentiments is very high. Is it making sense for everyone? Similarly, एक और चीज है, पॉजिटिव एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. कम्युनलिज्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस कम्युनिटी. जरूरी नहीं है कि कम्युनलिज्म हमेशा एक्सट्रीम हो. Communalism can be mild and moderate also. अच्छा, हम communalism एज ए टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेबस का पार्ट है. कैसे पढ़ते हैं? What is communalism? What are manifestation of
कम्युनलिज्म, माइल्ड, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम। एक तीसरा टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म। उसमें एक टाइप होता है वेलफेयर कम्युनलिज्म, जो ये कहता है कि मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं करूं, लेकिन मैं अपने रिलीजियस ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट करूं। सो आई एम वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ माई कम्युनिटी, सो दैट इज वेलफेयर कम्युनलिज्म। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को पढ़ो। ISKCON members are providing or did provide massive food relief in Hungary for Indian students who were coming home from Ukraine. Did you get the point? Welfare communalism. So you were working for the collective interest of your community. Actually point ये है कि communalism का मतलब होता है community. But usually जब हम पढ़ते हैं तो we narrow it down to religious community. Otherwise, it just means community. Strong attachment to one's own community. यहाँ पे community है students from India. Did you get the point? ठीक है? Next. Unsatisfied aspiration of rising middle class leads to increased probability of radicalization. Clear है? एक चीज है, aspirations जब बढ़ें और वो satisfy नहीं हो, so chances of radicalization, polarization are very high. ठीक, and finally we can conclude. Is this making sense for everyone? ठीक है. So far what we talked about, are all the 6 questions clear? Are the types, nature, how to construct the answer, is everything clear? कोई ऐसी चीज जो पूछना चाहते हो, समझ आ रहा है? ठीक है. This would be available on your platform, but just one request, प्रैक्टिस. ठीक है. अब वापस जाके इसको दोबारा मत पढ़ना. ठीक है. अब पहले खुद लिखना. हमने डिस्कस इतना तो कर ही लिया है कि क्वेश्चन समझ आ रहा है, अब खुद लिखना. क्या पता जब खुद लिखोगे तो और नए पॉइंट्स आएंगे. ठीक है. तो अभी आंसर दोबारा नहीं देखेंगे, ताजा ताजा है, आज थक गए हो, कल सुबह लिख लेना. ठीक है, लेकिन कल लिखना. ठीक. सो ऑन दिस नोट वी कंक्लूड द सेशन. हाँ जी, बताओ. आई थिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई थिंक, हाँ, YouTube जहां पे ये वीडियो अपलोड होगी ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे विल अपलोड. ठीक है. चलो, ऑन दिस नोट, बाय पीपल, हैप्पी स्टडिंग.